B point when the state is A. ठीक है, तो यानी कि ये मॉडरेट वैल्यूज विद स्टैंडर्ड डिविएशन के आसपास अगर वैल्यू, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सो सिग्मॉइड यू ऑलरेडी नो. तो अब हम देखते हैं कि हाउ दिस सिंपल परसेप्ट्रॉन, एक ही न्यूरॉन है, नॉट मोर देन वन न्यूरॉन, जस्ट इमेजिन वन नर्व सेल. डज वन नर्व सेल इन आवर बॉडी लर्न, एंड लाइकवाइज डज आर्टिफिशियल न्यूरॉन लर्न? तो उसके लिए वी आर जस्ट यूजिंग एन OR गेट. डू यू एग्री दैट दिस इज आल्सो अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? An OR gate or an AND gate, these are also classifications. Yes. Yeah, what are the features? X1 and X2. Yeah, the inputs of the gate are the features and the output is the OR function. So I have training examples. I have these 4 training examples. From the point of view of a neuron, अगर उसने OR gate सीखना है, if it has to learn this input output pattern, so it will need a neuron. So this is the neuron, this is the neuron. This is the neuron, and I have 2 inputs, so they will both be connected to their own weights, W1 and W2, and then the neuron will accumulate the weights, and then it will subject it to an activation function. एक bias भी हो सकता है, और it will subject it to an activation function, और उसका एक threshold हम रखेंगे. So let me keep the threshold at 0.6. And A and B 0 and 1 है, so it is a step function or a sine function. So it's a sine function actually, not a step but sine function. इसमें A and B 0 लग गया तो वो sine ही हो गया. Okay, and bias को फिलहाल 0 ही रखते हैं, and threshold को 0.6 रखते हैं. And let's see whether this neuron is able to learn this pattern. तो ग्राफिकली अगर मैं फीचर स्पेस बनाती हूँ तो x1 and x2 आर द फीचर्स, ठीक है, एंड इस तरह से फीचर स्पेस में 4 ही एग्जांपल्स है, तो 4 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, 0 0 1 1 1 0 एंड 0 1, एंड उनके आउटपुट्स भी मार्क कर दिए. नाउ डू यू सी दैट दिस पैटर्न इज इजीली सेपरेबल? आई कैन ड्रॉ अ लाइन हियर. अगर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी करती तो इट वुडंट हैव बीन अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम. In fact, this is logistic regression only. W1 and W2 को find कर रहे हैं. Obviously, W1, W2 जब find हो जाएगा, we are drawing this line only. So this is actually like a logistic regression. Line के उस तरफ सारे ones है, line के इस तरफ सारे zeros है. So we are learning, it's a linear classifier. Linearly separable, not linear. It is linearly separable patterns का classifier है. So let's see what happens. So how do we start the training? So we start with what is called the epoch 1. All the inputs को मिलाकर के एक epoch बनता है. So we start with T training example. The first training example, let's say 1 1 है, ठीक है, and weights को हमने initialize कर दिया to 0.1 and 0.5 and 0.5 randomly, ठीक है. So what will be the first output? जब ये 1 है और ये 1 है, then the output is what? Ma'am, 1. कैसे? Yeah, it will be 1 of course. That's because 0.5 एक है, तो 0.5 into 1 plus 0.5 into 1 plus 0, हमने bias को 0 रखा था. So this is the field, the accumulated field. तो हमने यहाँ पे जो न्यूरॉन का फील्ड लिया था, ये फील्ड पहले हो गया 1 into 0.5 plus 1 into 0.5 plus 0. तो ये फील्ड की वैल्यू हो गई 1. फील्ड की वैल्यू 1 है, एंड एक्टिवेशन की वैल्यू क्या होगी? उसके बाद एक्टिवेशन भी आता है. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर द एक्टिवेशन? एक्टिवेशन हमने थ्रेशोल्ड कहाँ रखा था? थ्रेशोल्ड वाज 0.6. 0.6. So according to this activation function, output will be 1. 1. ठीक है, so it's a correct output. तो एटलीस्ट Yes. फर्स्ट पैटर्न को तो उसने रिकॉग्नाइज किया. व्हाट अबाउट द सेकंड पैटर्न? रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. हाँ, ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा बिकॉज ये 0.5 बनता है, विच इज लेस देन 0.6. ठीक है, तो सेकेंड वाले का 0.5 जब है, तो accumulated field is 0.5 only,
and therefore the activation is 0. So this is incorrect. So what do we do now? How do we make it correct? वेट कम कर दो या ज्यादा कर दो वेट या फिर को तो अपना ज्यादा करना पड़ेगा ना, वेट को ज्यादा करना, वेट्स अगर को वेट ज्यादा कर दो या फिर जो वो है थ्रेशोल्ड है हमारा उसको कम, एक्टिवेशन वैल्यू उसको कम कर दो। थ्रेशोल्ड जो है ना, हाँ थ्रेशोल्ड को कम, या तो हम बायस भी ऐड करें एक, maybe we add a bias. So that's why I said the number of parameters are important. But actually, actual neural networks में इतने सारे neurons होते हैं that we keep the threshold constant and the bias constant and only adjust the weights. But actually, we have that much of freedom. We can adjust the weights, or we can adjust the threshold, or we can do both of them, or we can even put a bias and try and see what happens. So those are the network parameters. In this case, there is a single perceptron. तो उनके parameters को adjust करना होता है. So what we do is we sort of adjust करेंगे. तो कितना सवाल ये होता है कि how much adjustment करेंगे? How much should we adjust? How much should we adjust? So what we have done so far is the delta learning algorithm, जिसमें error के ऊपर depend करता है. So उसमें 3 terms होते थे, एक learning rate, एक error और input की value. Remember? मतलब ये बिल्कुल वही हो रहा है जो लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हो रहा है. दिस इज एक्चुअली अ ग्राफिकल वे ऑफ शोइंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो हम एरर कैलकुलेट करेंगे और एरर कैलकुलेट करते हुए सो वी हैव अ लर्निंग रेट. ओके, so we don't know how much to 0.5 था. should we increase it by 0.5? that will be a big jump. एंड एरर हो सकता है. आपको पता है ना what happens when the learning rate is too high. So this happens and the learning rate is too high. I may end up here somewhere. So I want to gradually come down to the lower level, and so I have a learning rate. So let me keep it at 0.2, and 1 is the error because the actual output is 1, the desired output is 1, and the actual output that is giving is 0. So 1 minus 0 is 1. So this is desired and this is actual or predicted. This is predicted. Okay. तो डिजायर्ड माइनस प्रेडिक्टेड जो है वो 1 है, 0.2 है, एंड ये हमने x is 1 in this case for the first weight, and for the second weight it is 0. तो second weight तो adjust नहीं होगा, but first weight will increase by 0.2. एंड हम थीटा को भी यानी थ्रेशोल्ड को भी चेंज कर सकते हैं ना. ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड में कोई इनपुट तो होता नहीं है. थ्रेशोल्ड में सिर्फ लर्निंग रेट आ सकती है एंड एरर आ सकता है. सो लर्निंग रेट इनटू एरर एंड इनपुट इज नॉट देयर, और वी कैन अज्यूम इट टू बी 1. बायस की बात नहीं कर रही हूँ, थ्रेशोल्ड है ये एक्टिवेशन फंक्शन का थ्रेशोल्ड. So that also decreases. So we have done both. We have increased one of the weights and we have decreased the threshold. Do you think decreasing the threshold will help in this case? Yes, ma'am. Why? Because the third input will W2 जो नहीं हुआ था कम ज्यादा, W2 जो ज्यादा नहीं हुआ था, it will now benefit from the reduced threshold, and that we can verify also because when we now apply the next input, you see the correct output will be produced because the threshold is reduced. 0.5 है, ये तो इनपुट ही 0 था तो नो प्रॉब्लम. इसमें तो इनपुट 0 हो गया तो इसका कोई असर, इसको बढ़ाने का कोई असर नहीं पड़ा. But this is 0.5, and then I also adjusted the threshold to less than 0.5, 0.4, and therefore this will also be correct. तो अब ये भी correct हो गया. Finally 0 पे obviously correct होगा. So एक epoch में हमने correct कर दिया. We can try out the second epoch and try out all of them again, and we find that all the outputs are okay. So दो ही epochs. In one epoch you exhaust all your inputs. One epoch means that neural networks में you have to have multiple epochs. So a single perceptron is able to do this simple linearly separable classification. तो AND gate भी linearly separable है. AND gate भी linearly separable है. And it can be similarly this thing. But XOR is not linearly separable. XOR जो है वो देखो, आप खुद ही देखो. Just work it out yourself. Do you think XOR is linearly separable? Is there a line that can discriminate the two cases? स्ट्रेट लाइन नहीं होगी कोई.
स्ट्रेट लाइन में कर्व्ड लाइन होगा ना? हाँ या यू आर राइट, सो समथिंग कर्व्ड होगा, समथिंग कर्व्ड होगा, तो वो तो चलेगा नहीं ना, लाइक विद अ सिंगल न्यूरॉन कैन यू गेट सच अ कर्व? सो द पॉइंट इज सिंगल न्यूरॉन में नहीं हो सकता है, and it requires mixing of signals to introduce a non-linearity in the circuit. It'll require a mixing up. तो उसके लिए we have to add, ये देखो, ये and है और XOR के लिए we have something like this. Okay, XOR के लिए this will be the plane. Now this is not a linear plane, obviously. So the solution is to either change the transfer function so that it has more than one decision boundary, or use a more complex network that is able to generate more complex decision boundaries. हमने W1 and W2 को चेंज करके वो प्लेन ऑफ सेपरेशन चेंज कर रहे थे. नाउ दिस इज द फीचर स्पेस. ये ग्राफ जो है वो फीचर स्पेस है. तो या तो हम उसको फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बनाए, तो देर आर टू मेथड्स. या तो हम उसको फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज राइट नाउ इट इज W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2. ठीक है. So this is a linear function with W से तो linear है ही, X से भी linear है. Now if I try to make it square or whatever it is, then I can probably end up with this kind of a decision boundary. So either I change the transfer function, but is that convenient to change the transfer function? आपने एक neural network बनाया, W's के साथ X को आप multiply कर रहे हो. Do you think I should now first add a squarer also and make it a more complex circuit like that? Should I square it here? Is that a good solution? So this case, this network has a simple transfer function, W1 into X1 plus W2 into X2, and then there is an activation function. And then again there is a summation. And now whatever. यहाँ ये मैं hidden layer की बात में करती हूँ. So either ये जो single neuron है, ये जो हमने single neuron बनाया था, इस neuron के यहाँ पे active हम transfer function को ही change करते हैं. So for instance, instead of this, I can just have square. I put a squarer here. I put a squarer circuit here and achieve a x square here. तो इस तरह से मैं या तो ट्रांसफर फंक्शन को ही चेंज कर सकती हूँ. ओके. और I can, because in the feature space it has to be a curved line. In the feature space, x1 and x2 के space में it has to be a curved line. That is only possible if I allow such a transfer function. Or I use a more complex network like this. I use a more complex network like this, so that there is more than one layer. So more than one layer में mixing up of signals हो रही है, यहाँ पे और यहाँ पे. So the single, instead of a single neuron, I now have a hidden layer. So I have the input layer and I have the hidden layer and I have the output layer. How many neurons are there totally? This is the output layer. So how many neurons would be there? बताओ, देख के बताओ ना कितने न्यूरॉन्स हुए. 5. No, not 5. इनपुट स्टेज पे कोई न्यूरॉन थोड़ी होते, इसको मैंने ब्लैक आउट इसीलिए किया. दिस इज जस्ट द इनपुट स्टेज. इट डजंट हैव एनी न्यूरॉन्स पर से. न्यूरॉन्स तो आगे. 3. हाँ, सो इट एक्यूमुलेट्स द सिग्नल्स. दिस. हाँ, 2. नॉट 2. यहाँ पर भी तो है. So there are 3 neurons, 1, 2 and 3. ये न्यूरॉन इन दोनों को एक्यूमुलेट कर रहा है, ये न्यूरॉन भी इन दोनों को एक्यूमुलेट कर रहा है. बट नाउ आई हैव गॉट हाउ मेनी वेट्स? All different weights. So these weights will be 4 weights here and 2 weights here. So instead of having just 2 weights, W1 and W2, I now have 6 weights. And I added a hidden layer ताकि signals अपने आप में mix हो सके. जब signals mix हो जाते हैं, अपने आप ही square terms आ जाता है. So I have a non-linearity at the end, at here. I have a non-linearity here, and then I'm again mixing them up.
Okay, the non-linear signals are being mixed up. So that sort of makes it linearly separable. एक जो linearly separable नहीं था पहले, now it will become linearly. You can have a decision boundary. So let us see if it is true. ऐसा होता है या नहीं होता है. So in general, therefore, I can have a network. इसमें multi-layer हो गया. इससे पहले जो न्यूरॉन था वो सिंगल लेयर का था, अब ये मल्टी लेयर हो गया है. So I can have a single layer feed forward network. अभी तक हमने जो किया है एक सिंगल परसेप्ट्रॉन को ही किया है. It can be multiple perceptron also. And I have a multi-layer feed forward network, in which case there are hidden layers also. And the third architecture is, so these are ANN architectures. The third architecture is when I have feedback connection. So these are all feed forward. This is also feed forward, and this is also feed forward. If I go in for feedback connections, then those are called recurrent neural networks. It may have hidden units or it may not have hidden units. Yeah. So this is an example of a simple feed forward network of a single perceptron जो हमने किया. ये black वाले neurons नहीं है. So these are the inputs. तो inputs आए और एक single neuron है, and it can also have multiple outputs. Can it have multiple outputs? Of course it can. You can always have another 2 weights and have another output here. So this is a single layer only. It's feed forward, it's single layer with multiple outputs. Now this, where we have added a hidden layer, becomes a multi-layer feed forward network. So now there is one layer for mixing up the hidden layer, and then there's the output. So between the input and the output comes from here. Between the input and the output, there's an output layer which is visible, and then there is at least one hidden layer, but there can be multiple hidden layers also. जितने hidden layers होंगे उतने ही mixing होगा और उतनी ही non-linearity सामने आ जाएंगी. So complex patterns can be detected. Then I have a recurrent network जिसमें feedback connection भी है. So here as you can see, ये output में जा रहा है, and then this is a single input, doesn't matter because the other input is coming from the feedback connection. Okay, so these two are accumulated. So output का एक portion जो है that is fed into it. So these are called a recurrent network. So this is an example of single layer feed forward with multiple outputs. So multi-class discrimination हो रही है यहाँ पे, multi-class discrimination. And did we do the weight adjustment for a single person? We just did it for an OR gate. More or less same algorithm वहाँ पर भी होगा. So every time you'll apply delta learning rule for this one, for this one, for all the weights you will apply the delta learning rules. That means learning rate multiplied by the error multiplied by the input. This is the input layer. These are not actual neurons. This is just, you can say, port or buffers. ये buffers होंगे. Can you guess why this should be a buffer? इसको मैंने eyes को directly नहीं connect किया. I could have connected it directly also. This is not a neuron, but it's a buffer. Why is a buffer needed at the input stage? यहाँ पे That's because कई training patterns होंगे, एक के बाद एक pattern. So this is I1 and at the first time instant, उसके बाद so जितने training patterns, this is I2 and so onwards. तो अलग-अलग time पे ये आते जाएंगे. So they need to be stored. That's why the input is shown like this, but it is solid to tell you that this is not a neuron but a buffer. तो यहाँ पर भी वेट एडजस्टमेंट उसी तरह से होगा जैसे हम पहले करते थे. ठीक है. Is there any mixing up of signals here? इस आउटपुट को सही करने के लिए I'll have to adjust W11, W12, the first index is for the output, the second index is for the input. So W1 connected to first input, W1 connected to the second input, and W1 connected to the third input. Are these weights affecting any other output? No, man. No. तो बिल्कुल separate हो गए, clean separation है, ये अलग है और and so onwards. तो ये सारे के सारे जो है वो अलग अलग है.
And so there is no mixing up. So we can safely do it just for we have done for a perceptron. We adjust the weights accordingly. But that will not be the case for feed for multi-layer feed forward network. उसमें ऐसा नहीं होगा. So there is mixing up occurring there. Right? यहाँ पे हम मिक्सअप भी कर रहे हैं. आउटपुट को लेके हिडन लेयर के बाद इसको हम मिक्सअप कर रहे हैं आपस में. So you know there we cannot apply the same rule. We have to do something else. What do we have to do? We have to do something else. क्योंकि मिक्सिंग अप हो रही है. So we have to see कि कहाँ कौन सा सिग्नल कहाँ फ्लो कर रहा है. And we need what is called the back propagation. We need to propagate the errors backwards. फीडबैक कनेक्शन नहीं है. बैक प्रोपगेशन नाम से कंफ्यूज मत होना. बैक प्रोपगेशन से आपको ऐसा लगेगा as if there is a signal that is being propagated. No, the signal is not propagated, but we'll see. The output error is calculated at the previous stages in a different manner. So example of classification is we can have a multi-class. So for example, lorry hai ya van hai, and if we determine by the mass of the vehicle and the length of the vehicle, so ye two inputs hai, and we are trying to classify into lorry and van. So the point is, how do we construct a neural network? Okay. So we need an architecture like this. एक बायस है जो W0 है और एक W1 है, W2 है, and this is mass and length, all of them given to a single neuron, and the neuron will try to detect whether it is a truck or a lorry or whatever, van. Okay, so but the point is that in this case they should be linearly separable. They should be linearly separable. तो अगर मैं x axis पे mass draw करूं और y axis पे mass draw करूं और x axis पे length draw करूं, then there must be a neat separation कि यहाँ पे trucks होंगे और यहाँ पे van होगा. So then I can use a single perceptron. But if they are mixed up together काफी thoroughly, then we cannot have this. Okay. So in general मैंने ये algorithm दिया है कि how to. So you begin with initial weights जैसे हमने OR gate में किया था, random weights. And then I keep on applying the training examples one by one and compute the output, compute the errors, use the error to update the weights. Old weight is equal to learning weight plus this error into X, where eta is called the learning weight or step size, and it determines how smoothly the learning process is taking place. And you repeat this whole thing again and again, epoch by epoch, till the error is 0 or almost 0. Error is almost 0. Okay, so the perceptron learning rule for a feed-forward, single-layer feed-forward network is given by this, where this is the error function, target or desired minus actual, predicted. Okay, desired is the target and y is the predicted. So ये simple algorithm है. But you don't really, for in case of hidden layer, you need a this thing. You need a back propagation. So let's see अगर hidden layer से XOR gate detect होगा. XOR is non-linearly separable. So let's make a a network and see कि ये है और ये मेरा है and ये है, and then there is another neuron here and this is there and this is there. So ये x1 है और ये x2 है and I'm doing some kind of a mix up. और ये 4 weights हैं, इनकी random मैं ले लेती हूँ -1 +1 and I put a +1 here also and -1 here. इनकी biases को 0 मान लेते हैं, तो 0 bias here and यहाँ पर भी 0 bias. Okay, and I assume a activation function which will be again a sine function, and let me take the threshold at 0. Threshold को मैं 0 मान लेती हूँ. Now these have to get mixed up in the output layer. तो इनकी भी weights में randomly +1 randomly नहीं, मतलब this is actually the trained weight and we'll see how it is able to detect.
और ये आउटपुट न्यूरॉन है, इसको मैं थोड़ा सा बायस दे देती हूँ -0.5. Okay. Now, how do I get these values is after training. But right now, I'm just showing whether it is able to. This is a hidden one. This is hidden two, and this is output neuron. Okay. Now let us work it out ऐसे ही. तो जब ये 1 1 होगा, तो what will be the output here? दोनों ही 1 1 होने से output is output of this neuron will be okay. The field of this neuron will be फील्ड को करने में क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग? 0. 0 या +1 एंड -1 को कंबाइन करके 0 हो जाएगा, एंड बायस ऑलरेडी 0 है. अब इसकी एक्टिवेशन फंक्शन अगर इस तरह की है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट हियर फॉर दिस न्यूरॉन? So it will be 0. Yes, ma'am. क्योंकि ये 0 पे है, अभी तक 0 ही है, तो 0 ही रहेगा. And if I had, it would have been good if I had taken a bias also, a negative bias here also, -0.5. तो क्या होता? तो field would have been -0.5. Yes, ma'am. -0.5 is definitely less than 0. तो आउटपुट 0 ही होगा. लाइकवाइज इसका भी आउटपुट 0 ही होगा. ठीक है. So let me keep a bias here also, -0.5 and -0.5, ताकि ये अच्छी तरह से पता चले कि बिल्कुल यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 है या 1 है. So then both these outputs are 0, and finally they are combined to make 0, and once again the output here will be -0.5. So again it is less than 0, and so the output will be 0. What about the case when both are 0 zeros? तब भी सेम सिचुएशन है. The field here is 0, the field here is 0. Bias add करके -0.5 हुआ. -0.5 is less than 0, so this will be 0, this will be 0, and finally this will also be 0, right? ठीक है. Yes or no? Yes, ma'am. Now what about for 1 0? What will be the field here? -1.5. -1.5. And what will be the field here? -0.5. 0.5. ठीक है. तो यहाँ का आउटपुट 1 हो गया, और यहाँ का आउटपुट 0 हो गया. ठीक है. सो 1 0 यहाँ कंबाइन करेंगे तो फिर ये 1 ही 1 होगा, एंड 1 -0.5 will remain 0.5, and so the output will be 1. ठीक है. Likewise for 0 1 सेम होगा, symmetrical circuit है. So can you work it out once again for me? Anyone? Then we'll end the class. Our next class at 12. So any one of you? For 1 0, for the case 0 1, और यहाँ का फील्ड क्या होगा 0 1 के लिए, 0.5 एंड इसके लिए इसका, -0.5. या, एंड देयरफॉर द आउटपुट हियर विल बी तो ऊपर 1 होएगा और नीचे 0. नीचे 0, और यहाँ पे आकर के यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब वही 0.5 फील्ड हो जाएगी और आउटपुट 1 हो जाएगा.
आउटपुट 1 हो जाएगा, ठीक है। सो डू यू एग्री दैट दिस हैज बीन एबल टू डिस्क्रिमिनेट द XOR गेट? यस। तो द हिडन लेयर का रोल यही है। हमने कोई नॉन लीनियरिटी नहीं, हमने ट्रांसफर फंक्शन को नहीं चेंज किया, वेट्स आर स्टिल द सेम, इट्स ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन W into X हमने सिर्फ एक हिडन लेयर ऐड कर दिया बस, एंड आई एम एबल टू डिटेक्ट अ नॉन लीनियर फंक्शन। So hidden layers contribute in discovering non-linearity. ठीक है, so I will now have to change. I'll have to leave the class because अभी भी आप लोग थोड़ा पीछे हुआ, and I wonder how to be at par with the other group. ये हमेशा आपके साथ ही होता है। Okay, so we'll call it day today. We'll meet after 5th, I guess. मंडे को तो आपकी क्लास है नहीं। लेट मी सी, हो सकता है मैं 3rd को ले लूं। आई मे टेक, आई विल इन्फॉर्म।